So before come to canonical quantization, so we are going to have some 1 or 2 lectures to review how relationships or clustered quantum formalism and from quantum mechanics to quantum field theoretical formalism. इसका जो link है, the way we go from classical mechanics to quantum mechanics and from quantum mechanics to quantum field theory. So there is a particular mathematical formalism which is attached to it. Before we are going to go for Lagrangian or Hamiltonian way of reformulating quantum field theory. So in that sense, we can say quantum field theory goes one step. For example, if quantum mechanics normally introduces complex value functions of space and time, and because psi is denoted as, so it's complex value. It's a wave function, इसका evolution space and time. इसको हम in terms of Schrödinger equation कहते हैं, d psi by dt, और the wave function evolves in time. ठीक है? अब quantum field theory जो है, it goes one step ahead. It is saying that it treats wave function itself as object which undergoes quantization. Okay. Quantum field theory में क्या है? So wave function को ही हम quantize करते हैं in that sense. इस complex value इसी को हम quantization करते हैं. And जो wave function psi है, which is transmitted in a field into a field operator it's an operator value quantity and it satisfies certain computation relations. Okay. So we can say, so this is how quantum mechanics treats wave function, how in quantum field theory the wave function itself undergoes quantization, and this side is transmitted in a field operator or an operated value quantity which satisfies certain commutation relations, which we are going to see future में. जब हम going to see canonical quantization, what are the commutation relations in quantum field theory. Okay, now इसको ये and इसी process को हम second quantization कहते हैं in literature. किताबों में अगर आप देखेंगे how we define first quantization, moving from classical mechanics to from quantum mechanics to quantum field theory. It's known as second quantization. So it's similar to the way in classical second quantization is similar to the way you go to classical variables, quantum variables, or हम कहते हैं operators. Thank you. अब सिर्फ प्लस करेंगे इससे तो साइड एक्स मिले
speed depends on velocity x. So the later will be continuous value index, which looks like this fluid. So even though this sign, its value depends upon coordinate x, but it's a continuous value function. So it can be range or series of values in that sense. And this would normally correspond to the degrees of freedom. Degrees of freedom means एक पैरामीटर है, दो पैरामीटर है, तीन पैरामीटर से accordingly increase or whatever. And basically, जो ये field quantization as a procedure है, या हमारे पास as a method है, what does it do? It basically quantizes things. But quantize किस चीज़ को करता है? It quantizes some operators, whether they are creation operators or annihilation operators. So field formula or create via creation or annihilation operators, and they are acting on some base space. ठीक है, जिसको हम फॉक्स स्पेस भी कह सकते हैं, जिसको हम इनफाइनाइट डायमेंशन हिल्बर्ट स्पेस भी कहते हैं, ठीक है, और स्टेट स्पेस भी कह सकते हैं, एंड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइज के वैल्यू क्या, एंड साइज आर बीइंग ऑपरेटेड अपॉन बाय ऑपरेटर्स, एंड देन दे कैन गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. क्रिएशन ऑपरेटर है या annihilation operator. You can have so creation operator हो गया vacuum state से ये ऊपर से नीचे जाएगा, तो या subsequent whatever. So our main concern हमारे पास जो है how the transition from classical to quantized fields or तो एक तो ठीक है नॉर्मली we go from classical mechanics to classical mechanics में values होते हैं कोई, then we go for quantized values. मगर हम quantized field theory from quantized values to जाते हैं, you just to quantize that field. You go one step ahead. Okay. Classical to quantum to quantization of that field itself. Okay. So this is a process or procedure. In the first stage, हम देखेंगे how we can mathematically we'll start from our formalism of classical mechanics. Classical mechanics में हम होता है ना one particle state, two particles, n particles. So we'll start with our classical way of looking at things, whether it's Lagrangian way of looking at it or Hamiltonian way of looking at it. Then we are going to quantization as a procedure in quantum mechanics, and then we can later see subsequently. So in this class and next class, we are going to just rehash our earlier the formal aspects of classical field theory. Our formal aspects of classical field theory will be classical mechanics or classical electromagnetic and classical fields represent करते हैं mathematics. That will be classical mechanics में या electrodynamics में field को classically हम कैसे formalize करेंगे, some mathematical way. फिर उसी को हम quantize करेंगे. That involves quantized fields. Up before we are going to come to quantized fields, so we are going to have some of the we are going to
See classical mechanics of तो क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ मास पॉइंट्स क्या है? जैसे हम मूव टू न्यूटन्स लॉज, जैसे हम से देखते हैं एफ इज इक्वल टू एम, तो एफ इज इक्वल टू एम को हम ऐसे लिखते हैं एम टू डबल डॉट क्या है फोर्स, ये भी फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इट्स आल्सो फोर्स। अब इसी चीज को अगर हम टर्म्स ऑफ लैग्रांज में लिखेंगे फॉर इनिशियल कंडीशंस गोइंग फ्रॉम so you can say Lagrange of particle इसका जो flexible distribution है is या इसका in terms of अगर variation distribution तो इसका एक्सट्रीम आएगा Now, if we want to apply Lagrange equation of motion for this, तो Lagrange equation of motion क्या है? So, if this of B section लगाएंगे, so this is constant or this is 0, so it will be classical mechanics for Lagrange equation motion for a point particle। तो इसी तरह तरीके से इसका but the point is momentum को हम ऐसे लिख सकते हैं using reorder, so this is to know how you understand the classical mechanics. So using reorder transformation, you can say that I am going and you can say equation as written, d dot is equal to this and q dot is equal to this one. Now, so this much you know from this one. Now we have to come to our formalism of Poisson physics. So if you just have classical mechanics to Poisson bracket formalism. So there is a way how we can go from classical mechanics to via bracket formalism. Okay. So in a particular case, for example, if you want to write these Hamilton equations in terms of some two dynamical variables. The P and Q, which
they can be defined as the commutator between two dynamical variables. The commutator between two dynamical variables can be written as the anticommutator. है ना? यहाँ minus और commutator होगा तो we have a square bracket here. So any anticommutator for two dynamical variables can be defined as this. Okay. Now you see here. So we can have dynamical variable A can be expressed in terms of Poisson bracket. So what you are so there is a dynamical variable A, in terms of Poisson brackets, we have to X. So we can have dA by dt can be as we don't P dot will be d by dt, dp कट जाएगा, d go by. Why we wrote this and this? So we have a dynamical variable A. इसका टाइम डेरिवेटिव ये है, t के साथ में. So we want to see this quantity which depends upon not only t but p as well as q. तो अब हमारे पास ऑलरेडी जो हैमिल्टनियन फॉर्म है p डॉट इसके बराबर है q डॉट टू आर गोइंग सम p डॉट q डॉट p डॉट a q डॉट a. तो एक माइनस है, so it will be dA by we got minus dA plus dA minus again dA by dt. We got or I can say जो हमारे पास आ रहा है sort of this Poisson bracket here. So we have little equation of motion from Hamiltonian form. So we have arrived at Poisson bracket of form. So जो हमारे जो ये equation of motion है, so we can write it as plus A. So we have written this as इसका डेरिवेटिव as Poisson bracket. तो अब जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एक तो अपना वेरिएबल है, एक इट्स अ डायनेमिकल वेरिएबल प्लस दिस Poisson bracket.
ठीक है. So if you remember your class of quantum mechanics, E minus 2E did not come out to be. Did not come out to be 0. So you can see a relation है there. So just in class of mechanics. But here you can see. So you can see here the Hamilton is found to be constant of motion provided mass and provided mass and potential do not depend on time. So अगर जो कि हमारे पास ब्रैकेट है, तो इसका अगर टाइम के साथ एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं है, so it will be this side will be equal to this side. This means this portion is formed by the zero bracket formula. There is no explicit difference of time for this quantity. This will be equal to. So then it will be as a constant of motion. It will be as a stop करते हैं ना, x equal to n. ये क्या है? एक बार इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या है? प्लस c. एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या है? c प्लस. So it's a constant of motion. So if in the same way this Poisson bracket, this is not an explicit dependent on time, so we treat it as a constant of motion in that sense. और इसका मतलब दूसरा मतलब ये भी है in that sense that if they are same, this will go to P is going to go, P is going to go, इसका commutator is जो है go to or be. So these all equations can be generalized. Arbitrary systems and arbitrary degrees of freedom. Okay, so we have to look. So this was for how we can write it in terms of Poisson. This because once we are going to हमने कहा start में that we are going to use canonical permutation relations. ठीक है? तो तुम permutation relations को कैसे लिखते हैं? In terms of formalism, first we should be in the class or to rehash it. Okay? ताकि अब अगर quantum mechanics if you go to quantum mechanics, if you go to quantum mechanics में जो for example जब A B is equal to quantum mechanics में है इसका जो क्लासिकल Poisson bracket for quantum mechanics is like this. So anti-commutation is the barabar. This is the way we write. We write classical Poisson bracket for comes to S. The relationship of Poisson brackets in the classical mechanics is the relationship of this to the quantum mechanics. For example, well, I would like to see commutator of two variables
This one H cross. It's not the same. And there are some other properties of quantum mechanical variables which we are going to use. For example, one was using Dirac notation. Dirac कौन सी notation? Bracket form state psi ऐसे क्या इसका ड्यूअल क्या है? इनर प्रोडक्ट क्या है? psi इसका है ये psi it's a straight psi but if it's being operated upon by an operator के बीच में operator operates straight psi तो काय नहीं करना चाहिए अगर ऑपरेट psi करेंगे ये फ्लिप स्टेट इसका flip करते हैं position operators को नीचे करके ठीक है you can see it the same way there are some properties for example अगर हमारे पास two vectors हैं not sin psi phi and psi which is a complex number they are going to hold some properties for example phi times alpha psi plus beta psi किसके बराबर है तो मल्टीप्लाई अल्फा स्केलर बाहर आ रहा है क्या है सर 5 टाइम्स साइन प्लस बीटा टाइम्स 5 ऑफ this is one property another property is phi of psi अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स कंट्रीब्यूट करेंगे शाबाश क्या होगा दिस विल फ्लिप हियर सो ऑपरेटिंग परमिशन कंट्रीब्यूट सो दिस विल इसका कंट्रीब्यूट किसके बराबर है शाबाश इट विल बी psi सो इन द सेम वे phi of phi किसके बराबर है 0 provide if phi is अब ये है कि इन द सेम सेंस जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है सो यू आर गोइंग टू यूज ऑल ऑफ देम दीज प्रॉपर्टीज तो अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज है फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में phi of is probability of the system oscillates psi with phi. So again, measurable quantities are associated with each other. So phi of this can you just get it from this equations. O diagonal on side. So you can also write it like O, you flip it here. In the same way, expectation value कैसे लिखते हैं? Operator expectation value of the operator operating on the quantum scale is psi operator. तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे डिस्प्ले? इट्स बेसिकली फ्लक्चुएशन. आप जब पढ़ते हैं ना मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ मीन वेरिएंस माइनस मीन ऑफ द स्क्वायर ऐसे निकालते हैं. तो इन द सेम में हम जो साई फंक्शन है वेरिएंस फंक्शन उसका कैसे हम मेजर करते हैं? प्रोबेबिलिटी जब हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम तो वो कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल this is the square of this will be this is operator. So this should be equal to square of this should be equal to you can also write it as minus
लोगे स्क्वायर ऑपरेटर, लोगे मीन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो दिस ऑपरेटर, इसका वेरिएंस ऑपरेटर, स्क्वायर ऑफ द ऑपरेटर, इट शुड बी इक्वल टू ये स्क्वायर ऑफ द ऑपरेटर, ये मीन ऑफ दैट स्क्वायर, so we can have this equivalence from quantitative maths. And आपकी जो uncertainty issue है for two variables, two simultaneous, if you get into quantum mechanics, the commutation relation for two simultaneous variables, two simultaneous commuting variables. Again, commuting, the other is non-commuting. तो commuting variables में क्या है? मानिए डेल्टा टी टू डेल्टा ए इज इक्वल टू commuting में 0 है, non-commuting में 0. But since in quantum mechanics the variables are non-commuting, okay, simultaneously, for example, they are simultaneous and they are conjugate, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, जैसे पोजीशन है मोमेंटम के साथ, एनर्जी है टाइम के साथ. सो इफ यू आर गोइंग टू मेजर वन साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट मेजर द अदर. जैसे अगर दो वेरिएबल्स है पी एंड क्यू, पोजीशन एंड मोमेंटम, अगर आप पोजीशन को मेजर करेंगे यू कैन नॉट एट द सेम टाइम मेजर मोमेंटम. ये हमारी यही तो अनसर्टेनिटी है ना, द साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ टू non-commuting variables. You cannot measure two non-commuting variables simultaneously, and that is given by this relationship. This zero is the answer. मेजर कर सकते हैं मगर फिर 100% एक्यूरेसी से नहीं कर सकते. अगर 100% एक्यूरेसी से करते हैं तो पी क्यू माइनस फोर पी, जिस टाइम हमने क्यू को मेजर किया, क्यू को मेजर किया, उसी टाइम क्यू और बी को भी 0. So we cannot measure have an accurate simultaneous measurement of two commuting variables. What do you point out? In the same way, we can also have ideal state of position operator. We describe a particle which is localized at a particular point, that is given by us. Two states which are localized at distant points in space have zero overlap. इसका मतलब ये है अगर हमारे पास फ्यूजन आइडियल स्टेट्स है which are constantly normalized or randomized हैं, ये ऐसा नहीं है. Just like हम डेल्टा फंक्शन करते हैं, Q is equal to Q prime can be 0 or maximum, and they satisfy complete distribution. Complete distribution क्या है? यहाँ कैसे from complete distribution. So this is called 1. Or you can also write it like this. अब मैं थोड़ा सा just have one statement in stop. अब जो डायनेमिकल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, which is given by Heisenberg equation of motion
So it's known by this commutator of this with this from classification. हमारे पास क्या है? O does not have explicit time independence. अब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कौन सी पिक्चर है? एक है हाइजेनबर्ग पिक्चर, एक है श्रोडिंगर पिक्चर, एक है इंटरेक्शन पिक्चर. यू जस्ट रिहाइड ऑल द थ्री पिक्चर्स. एक में ऑपरेटर्स वैसे रहते हैं स्टेट्स इन्वॉल्व, दूसरे में स्टेट्स वैसे रहते हैं ऑपरेटर चेंज करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. But we can also show the equivalence of these two pictures by interaction picture. अब इसलिए हमारा मकसद क्या है? जो स्टेट्स आए हैं ये स्पेस टाइम में कैसे इवॉल्व होंगे, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स है. हमको अब क्वांटम फील्ड क्वांटाइज्ड स्पेस टाइम कैसे इवोल्यूशनाइज करेंगे फील्ड्स. ठीक है. So you have to rehash all the pictures from side that if you want to make a transition from state A to state B or between two states. Okay. So you can write it like this. This is a sort of disrupt transition should करते हैं. Delta E minus delta E1 minus delta E2 H2. You can see the state from time T to थोड़ा बहुत should I say something or stop? So